student, today we are learn about motion and time in this chapter. So let's start. In class 6 you learn about different type of motions. You learn that a motion could be along a straight line में हो सकता है, it could be circular or periodic. Can you recall this three type of motions? Table 13.1 gives some common example of motion. Identify the type of motion in each case. ये आपको दिया है. सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, वो कैसे जाते हैं, कैसा उनका होता है वो आपको देखना है. बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, वो पीरियोडिक टेबल होता है, राइट, पीरियोडिक टाइम मोशन. पेडल ऑफ अ साइकिल इन मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मोशन ऑफ अ स्विंग एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम. ये किस टाइप के मोशन हैं वो सारे. It is common experience that the motion of some object is slow while that of some either fast. ठीक है, फास्ट हो सकता है, स्लो और फास्ट में हम देखते हैं. We know that some vehicle move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of this object as slow or fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? If vehicle are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. ठीक है, एक ही बात पर. इसमें एक्टिविटी क्या दी है? Look at the figure. It show the position of some vehicle moving on a road in the same direction at same distance, some instant of time. Now look at the figure 13.2. It shows the position of the same vehicle after some time. From your observation of the two figures, answer the following question. Which vehicle is moving the fastest of all? Which one of them is moving the slowest of all? ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग दे रखा है. ये सारे व्हीकल्स दे रखे हैं. व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. कौन से फास्ट और कौन से स्लो. पोजिशन ऑफ व्हीकल शोन इन द आफ्टर सम टाइम. ठीक है, फिर क्या दिया है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ अ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर. टाइम और डिस्टेंस देंगे तब हम बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begin to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. ठीक है, बस से आपकी साइकिल का जो डिस्टेंस होगा वो तो बहुत ही कम होगा. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? We often say that the faster vehicle has a higher speed in a 100-meter race. It is easy to decide whose speed is the highest. One who take shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. ठीक है, फिर क्या दिया है स्पीड के बारे में. You are probably familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. मतलब एक डिस्टेंस को तय करने में लगा समय, उस हिसाब से आप उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is slower. तब हम बता सकते हैं कि इतने टाइम में ये बस ने इतना डिस्टेंस किया, इसने इतना किया, तो कौन सी स्लो है और कौन सी स्पीड में थी. We can tell which one is slower. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. और उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की स्पीड. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour. इसका मतलब क्या होता है कि एक घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं.
However, a car seldom moves with a constant speed for some 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then pick up speed. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with the कांस्टेंट स्पीड और नॉट बर्निंग ड्यूरिंग दैट हवर्स. ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं कि वो किस कांस्टेंट स्पीड से कर रहे हैं या कार स्लो कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, वो नहीं, बट उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. द स्पीड कैलकुलेटेड देयर इन एक्चुअली the average speed of the car. In this book we shall use the term speed for average speed. So for us the speed it is the total distance covered divided by the total time taken. Thus speed is equals to क्या होता है, total distance covered by total time taken. मतलब जितना डिस्टेंस जितने समय में कवर किया है वो उसके हिसाब से हमें उसकी स्पीड मिल जाती है. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6 you learned how to measure distance, but how do we measure time? Let us find out. Measuring of time. Next हमारा टॉपिक है measuring of time. If you did not have a clock, how would you decide that time of the day it is? अगर क्लॉक नहीं होगा तो क्या टाइम हो रहा है हम कैसे बताएंगे? Have you ever wondered how our elder could tell the approximate time of the day by just looking at the shadows देख के वो टाइम बता देते थे. How do we measure time? Interval of a month, a year. Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after defined interval of time. ठीक है, for example they found that the sun rises every day in the मॉर्निंग में होता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. अ न्यू ईयर a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. उससे हम year decide करते हैं. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. उससे छोटा किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं? Clocks or watches are perhaps the most common time measuring device. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? वो किस तरीके से टाइम मेजर करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well known periodic motion is that of a simple pendulum. उसे हम क्या कहते हैं? Simple pendulum. सो ये दी हुई है आपको, देखो, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक और डिजिटल क्लॉक, सम कॉमन क्लॉक्स. फिर इसमें क्या दिया हुआ है? अ सिंपल पेंडुलम जो कि सिंगल है, और उसके बाद दिया है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं, मतलब हिलाते हैं, उसका पोजीशन दिया हुआ है. ठीक है. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन suspended from a rigid stand by the thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. Shown the pendulum at the rest, it means position 0. ठीक है, रेस्ट पे मतलब उसकी पोजीशन 0 है, इसमें दिया है आपको फिगर में. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion. और ये इसका एग्जाम्पल है oscillatory motion का. ओके, फिर क्या दिया है? The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position 0, moves to A to B and back to O. The pendulum also completes the one oscillation when its bob moves from an extreme position A to the other extreme position B and come back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. मतलब जो पोजीशन दी हुई है. ठीक है. ओके, तो क्या दिया हुआ है? जैसे कि इसमें देखो,
पिक्चर में आपको क्या दिया हुआ है कि अगर ये पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 0 से, तो 0 से ये ए पे जाएगा, ए से फिर वापस बी पर आएगा और बी से फिर से जब वो ए पर आएगा तब एक पीरियड कंप्लीट होगा टाइम का, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड हुआ। अगर वो ए से स्टार्ट कर रहा है तो ए से वो बी पर जाएगा और बी से फिर से वापस रिटर्न वो ए पर आ रहा है, तब वो एक पेंडुलम जो है उसका टाइमिंग खत्म होगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आपको दिया है, देखते हैं हम। एक्टिविटी दी है, सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोवन इन फिगर विथ अ थ्रेड और स्टीयरिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर, स्विच ऑफ any fans nearby, let the bob of the pendulum come to rest at its means position, ठीक है, रेस्ट पे आ जाए वैसे रखना है उसको। मार्क द मीन्स position of the bob on the floor below it or one of the wall behind it, ठीक है, उस पर उसे मार्क करना है। To measure the time period of the pendulum we will need a stopwatch, उसके लिए हमें stopwatch की जरूरत है। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wrist can be used. Stop clock नहीं है तो ये use कर सकते हैं। To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. Note the time on the clock when the bob is its means position. तब नहीं नोट करना है हमें, ठीक है। Instead of the means position, you may note the time when the bob is at one of its extreme position. Measure the time the pendulum take to complete 20 oscillations. Record your observation. 20 oscillation जब वो करता है तब आपको उसका रिकॉर्ड करना है, ठीक है। टाइमिंग इन टेबल 13.2 the first observation shown in just a sample. Your observation could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observation. By dividing the time for 20 oscillation by 20, get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum. तो उसका हमें time period find करना है। Is the time period of your pendulum nearby the same in all cases? Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with one or more, ये टेबल आपको दिया है, cells. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clock is much more accurate than that by the clock available earlier. Units of time and speed. The basic unit of time in a second, its symbol is S. Larger unit of time are minute and hours. You already know how these units are related to one another. What should be the basic unit of speed? Since the speed is distance upon time, the basic unit of speed is meter upon second. Of course, it could also be expressed in other units such as meter upon minute and kilometer per hour. You must remember that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 km and not 50 kms, or 8 cm and not 8 cms. Bujo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? किस तरीके से? Different units of times are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in year rather than in days or hours, ठीक है। ईयर में हमारा आसानी से बता सकते हैं और डेज और आवर्स में नहीं। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर the time taken by you to cover the distance between your home and your school. उसको हम ईयर में नहीं बता सकते। How small or large in a time interval of 1 second, the time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute. That is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for children. Children के लिए ये higher होता है, ठीक है। Many times measuring devices were used in different part of the world before the pendulum clock became popular. Sundials, water clocks and sand clocks.
are some examples such devices. Different designs of these devices are developed in different part of the world. Thank you.